total number of poles, and A is the total number of parallel paths, right? And capital N is my speed in RPM, rotational speed in RPM, speed in RPM. RPM is what? Revolutions per minute. So can you tell me flux cut by one conductor in one revolution? Flux cut by one conductor. Flux cut by one conductor in one revolution. बताइए क्या हुआ? एक पोल का फ्लक्स है 5, यानी कि एक पोल के नीचे से कितना फ्लक्स पास हो रहा है 5, और बी पोल के मशीन से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा P5। ये देखो, सपोज आपने कहा ये दो पोल की मशीन है, एक पोल से सपोज इतना फ्लक्स निकल रहा है, एक पोल का फ्लक्स आपने कहा ये 5, तो दो पोल से कितना फ्लक्स आएगा 2 5। 4 पोल की मशीन है तो 4 5, 8 पोल की मशीन है तो 8 5, इससे 3 पोल की मशीन है तो 3 5। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड बताइए कितने होंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड कितने होंगे? सही, 1 मिनट में n है तो आपने पूछा है 1 सेकंड में कितना है? n by 60। सपोज आपने कहा कि ये रोटर जो है 1 मिनट में यानी 60 सेकंड्स में 600 रिवॉल्यूशन बना रहा है, तो 1 सेकंड में कितने बनाए? 600 by 60 यानी 10। That means n by 10 is the number of revolutions per second. And now tell me flux cut by each conductor per second is how much? Flux cut by each conductor per second. Flux cut by each conductor per second. Flux cut by each conductor per second is how much? Right? Flux cut by one conductor per revolution into number of revolutions made per second. यानी कि P5 into n by 60. Is it not? Right? इसको कहते हैं एवरेज रिड्यूस्ड ईएमएफ। एवरेज रिड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर। एक कंडक्टर में कुल इतना ईएमएफ आपको मिलेगा। तो अब बताइए एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ बताइए। Z by A पर सपोज आपने कहा कि कुल मिलाकर 100 कंडक्टर है और ये 100 कंडक्टर 10 पैरेलल पाथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो गए? 100 by 10 यानी Z by A। So what is the total induced EMF? Total EMF generated is average induced EMF into number of conductor per parallel path, यानी कि P5N by 60 into Z by 8. So that is finally you got the formula E equal to P5N Z by how much? 60 into 8. Clear?
लिखेगा। सर ये पैरेलल पाथ क्या होगा? पैरेलल पाथ समझ लो। कुछ लोग सोच रहे हैं पैरेलल पाथ क्या है, तो ये आपका जो आर्मेचर है कैसा है, सिलेंड्रिकल है, राइट? इस तरह से इसका कुछ लेंथ है और इसका कुछ डायमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाइंडिंग्स है, ये आपके स्लॉट्स बने हुए हैं, राइट? इस स्लॉट्स में क्या है, कंडक्टर्स पड़े हुए हैं। कंडक्टर का मतलब वाइंडिंग। तो आपने इस वाले स्लॉट से एक कंडक्टर निकाला और सपोज उसका रिटर्न कंडक्टर ये, इसी तरह से इस स्लॉट से एक कंडक्टर निकाला और उसका रिटर्न कंडक्टर ये। तो देखो क्या बनते जा रहे हैं आपके पैरेलल पाथ बनते जा रहे हैं। ये पैरेलल पाथ आपने कहा कि कुल मिलाकर के ए है और टोटल कंडक्टर यानी टोटल वाइंडिंग कितनी है, जेड। तो एक पैरेलल पाथ कितना हो गया, जेड बाई ए। तो कुल मिलाकर ये पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ आएगा वही हमारा नेट ईएमएफ होगा, क्योंकि सारे क्या है पैरेलल में। तो ये आ गया E इक्वल टू P5 बाय 60। यही आपका जनरेटेड ईएमएफ है जनरेटर के केस में, और यही आपका क्या है बैक ईएमएफ है किसके केस में, मोटर के केस में। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं, चाहे बैक ईएमएफ का लिखें चाहे जनरेटेड ईएमएफ का लिखें, P5 बाय 60 इज सेम फॉर। अब एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, फॉर वेव वाइंडिंग, वाइंडिंग दो तरह की होती है आर्मेचर, या तो वेव कनेक्शन होगा या फिर लैप कनेक्शन। अगर उसने मैन्युफैक्चरर ने वेव कनेक्शन कर दिया है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, 2, एग्जैक्टली 2। और अगर लैप कनेक्शन किया तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सही है, कैसे होता है इसके लिए आपको वाइंडिंग खोलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं इसकी, केवल इतना समझ लो। वेव के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो, और लैप कनेक्शन के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू P नंबर ऑफ होल्स। याद रखने के लिए बताइए, you know the trick, you want to know the trick, आप remember this rule। कभी आपसे गलती ना हो जाए एग्जाम में, उसने निकाल लिया कनेक्शन और आप ये इसको P करके सॉल्व करके चले जाओ, ट्रिक समझ लो। लैब में P है, देखो निकलता L A P, एनालाइज दिस व्हाट L A P, इसमें A भी है और क्या है P भी, दोनों है ना। यस सर, जहां ये दोनों मिल जाए वहां पे इक्विलिटी साइन लगा। लैप कनेक्शन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर हो जाएंगे। इतना अगर ठीक कर लोगे तो दूसरा तो अपने आप ही लिख लोगे। वेव P is equal to lap P is equal to। Now you can solve numerical